Good morning, students. Today we will discuss the new words of chapter The Constitution of India. Okay. So firstly you tell me that why 26th January is celebrated. Yes, anyone? Very good. So 26th January is celebrated because on this day the Constitution of India was implemented. Okay. So it was adopted on 26 November 1949. Okay. And 26 November is also known as National Law Day. Okay. राष्ट्रीय कानून दिवस जिसे हिंदी में बोलते हैं नेशनल लॉ डे 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड. It was adopted on 26 November 1949 and it was implemented on 26 January 1950. So every year 26 January is celebrated as a Republic Day. Okay. So first we will talk about the Constitution. So what is the meaning of Constitution? Okay. So Constitution is a system of beliefs and law by which a country, state or a organization is governed. Okay. So it is a system in which a country, state or organization is working. Okay. Or we can say that Constitution is a set of rule. In simple language we can say that it is a set of rules which define the rights of the people of the country and the limit of the government. Okay. Or rules for the working of the government of the country, government of the state. So Constitution we can say is a set of rule which define the rights and duties of the people of a country and the rights and the duties limits of the government of the country. Or we can say it is a system in which the government of the country work. Okay. एक ऐसा सिस्टम जिसकी लिमिट में रह के जो गवर्नमेंट है वो काम करती है. ओके. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम वर्ल्ड में देखें तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा संविधान है लिखा हुआ. ओके. एंड डिफरेंट थिंग्स आर टेकन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. And at present there are 350 articles and 12 schedule and 22 parts. Okay. And it was ready in 2 year 18 month and 8 days. Okay. 2 साल 11 महीने और 8 दिन में जो हमारा संविधान है वो बन के रेडी हुआ था. ओके. सो इट टेक 2 years 18 month and 8 days. ओके. 2 year 11 month and 8 days. Okay. Then we have next preamble. So preamble is an introductory statement in a document. Okay. So it is an introductory statement in a document. So जो हमारा संविधान है, so on the we can say introductory page of our constitution it is written. So what is the preamble of constitution says? So it says that we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a, कि जो हमारा हम सब इंडिया के लोग हैं, भारत के लोग हैं, एंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूट है वो क्या है, सबसे सुप्रीम है. सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन. ओके. सोवरेन सुप्रीम है, सोशलिस्टिक की एवरीवन हैव राइट टू स्पीक. Secular means that it does not represent to any particular religion. In fact, it treat all the religion equally. Democratic republic, and the people have the right to speak, to vote, to get education,
जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली, कि एवरीवन हैव द राइट, सोशली उनको राइट है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली ऑल्सो लिबर्टी ऑफ थॉट, कि अगर किसी को अपने कुछ भी थॉट है उसको एक्सप्रेस करना है, बोलने की आज़ादी है, बिलीव फेथ एंड वर्शिप, जो जिस भगवान को मानता है उसको पूजा करने की आज़ादी है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी and to promote among them all, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integration of the nation, integrity of the nation। तो जैसे हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, फिर भी हमारी कंट्री में क्या हमें यूनिटी देखने को मिलती है। ओके, सो इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, it was adopted as earlier also I tell you 26 November 1949 को अडोप्ट किया गया था, and give to ourselves this constitution, and it was implemented on 26 January 1950। The next we have parliament। okay, so parliament is a group of people who are responsible for making law in a government। कि parliament में क्या होता है मेनली, उसमें कुछ लोगों का ग्रुप बना होता है जो कि कुछ भी लॉज बनाने हैं गवर्नमेंट में, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, सो मेनली पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया इज सिचुएटेड इन दिल्ली, एंड देर आर 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, वन इज कॉल्ड एज अपर हाउस एंड द सेकेंड इज लोअर हाउस। जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा बोला जाता है, राज्यसभा इज नोन एज द अपर हाउस and Lok Sabha is known as the lower house। okay, so in Lok Sabha the people are elected by direct election, कि लोग हैं वो direct election से लोग उनको elect करते हैं, represent करते हैं, but in राज्य सभा और upper house the people are selected on indirect election। okay, so वो indirectly select होते हैं from the state legislative assembly, जो कि state की विधानसभाएं होती है उनमें से उनको select किया जाता है। okay, so example can be like Manmohan Singh, once upon a time he was not a member of Lok Sabha and Rajya Sabha, but then also he was appointed as a member of Rajya Sabha, उनको राज्य सभा का member appoint किया गया था। okay, so this is about parliament। then we have secular। so secular is not having any connection with religion, it means the Indian constitution does not says that it represent any particular religion, it says that Indian constitution or India treat all the religion equally, कि वो सभी religion को equally treat करते हैं। okay, then the next we have democratic। so democratic relating to is supporting democracy or its principle। so what is democracy? democracy means the representative of the country are elected by the people, कि जो गवर्नमेंट होती है हमारी वो लोग अपनी मर्जी से खुद चुनते हैं। ओके, दे हैव द राइट ऑफ वोटिंग, कि उनको वोट देने का राइट है। सो वट एवर टू हुम दे वॉन्ट दे कैन इलेक्ट। ओके, सो जिसको वो चाहते हैं उसको वो इलेक्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी, कि पीपल हैव द राइट to select their representative। okay, then we have sovereignty। so it's supreme power और authority, कि जो हमारा constitution है हम उसी को supreme मानते हैं। okay, that is the power और authority of our country, कि वही हमारी power है, वही हमारी authority है। okay, so our constitution is sovereign, so it is given in the preamble of the constitution। The next word we have fraternity। so it is brotherhood, कि ये भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। ओके, कि in fact there are the people in India are living from the different religion, but then also there is unity between the people। okay, so it is fraternity। okay, it encourages for the brotherhood। then we have liberty। ओके, सो लिबर्टी मीन्स फ्रीडम टू लिव एज वी विश, कि जैसे हम चाहें वैसे हम रह सकते हैं, कि जो हम चाहें वो एजुकेशन हम ले सकते हैं, जो हम पहनना चाहें वो हम पहन सकते हैं, जो हम खाना चाहें वो हम
खा सकते हैं. वी हैव नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस टाइप ऑफ थिंग्स, कि हमारे ऊपर ऐसी चीज़ों की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है. सो दैट इज़ कॉल्ड लिबर्टी, कि हमें आज़ादी है उस चीज़ की. फ्रीडम टू लिव एज वी विश, कि जैसे हम चाहें वैसे हम रह सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द न्यू वर्ड्स ऑफ द chapter the Constitution of India. So first, Constitution, so it is a set of rule which define the limits of the government, the rights of the people of the country. Then preamble, it is given as an introductory statement in a document. Then Parliament, so it represents the group of people who are responsible for making law in the government. Then secular means not having any connection with particular reason. In fact, our constitution treat all the religion equally. Then we have democratic, so relating to a sporting democracy or to its principle. So democratic means our country is democratic country. Why? Because the people have the right to select their representative, कि जो लोग हैं उनको अपना representative select करने की आज़ादी है. That's why India is known as a democracy country. Okay. Then sovereignty, it means supreme power or authority of the government, or we can say our constitution or Indian constitution we consider as supreme power or authority of the country. Then fraternity, so it is brotherhood, feeling of brotherhood. Then liberty, freedom to live as we wish. So students, read these new words from your book, also watch the video. If you face any problem, any doubt, you are free to ask. Thank you.